Hey guys, welcome you all to the channel Maniacs, where information from different spheres meet. So today we are going to discuss about common diseases that are encountered in case of pet dogs. So let me welcome you all to this particular channel and let us begin all the important diseases one by one. Let us begin. The very first disease about which I am going to talk is canine distemper. It affects generally young puppies below the age of 6 months. That does not mean that the cases of canine distemper are not recorded or are not seen in old or adult dogs. It is seen, but it generally affects the young puppies, right? So it is a viral disease, and the symptoms which will be visible are epilepsy, convulsion, and there will be fever, vomition, paralysis, coughing, and there will be runny eyes. ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो कैनाइन डिस्टेम्पर में देखा जाता है डॉग जिसे कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ होता है उनमें कन्वर्जन्स, उनकी बॉडी जो है वो मतलब जर्की मूवमेंट्स उनमें देखा जाता है। ठीक है, डॉग जो होगा अपने आप को अपने मींस लेग्स को अपने बॉडी को जर्क करेगा, दैट पर्टिकुलर सिम्टम इज सीन। बट डोंट कंफ्यूज, काफी टाइम ऐसा भी होता है, नॉर्मल फीवर में भी वो होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट वन, राइट। सो ये सारे कुछ सिम्टम्स है कैनाइन डिस्टेम्पर के। कैनाइन डिस्टेम्पर इज ऑल्सो नोन एज हार्ड पैड डिजीज बिकॉज इट हार्डन्स डॉग्स नोज एंड फुट पैड। तो डॉग के जो नोज मसल एरिया एज वेल एज उसके फुट पैड्स हार्ड हो जाएंगे। दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज हार्ड पैड डिजीज। इट इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट लाइक शेयर्ड फूड बॉल्स। अगर किसी एक पपी या डॉग को कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ है और उसके साथ आपने और एक डॉग को रखा है तो देयर इज ऑल चांस दैट इट मे स्प्रेड एंड इवन एयरबोर्न थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स भी कैनाइन डिस्टेम्पर स्प्रेड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू विजिट योर वेटनेरियन। वो क्या करेंगे, इट विल गिव इट द सपोर्टिव थेरापी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिवेंशन विल बी टेकन सो दैट नो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट कैनाइन डिस्टेम्पर सिम्टम्स। कैनाइन डिस्टेम्पर इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। इट इज ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। सो अगर आपने शुरुआती दिनों में उसकी वैक्सीन करवाई है और आप रेगुलरली हर एक साल उसको कैनाइन डिस्टेम्पर एंड जो मल्टी डिजीज वैक्सीन करवा रहे हैं, देन देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग कैनाइन डिस्टेम्पर। ओके, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 95% में अगर आपने वैक्सीन करवाए हैं तो फिर उसमें सिम्टम्स या फिर डिजीज नहीं देखी जाएगी, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड डिजीज दैट इज कैनाइन पार्वो और द पार्वो डिजीज। सिम्टम्स इसमें क्या रहेंगे, देर विल बी वोमिशन, देर विल बी डायरिया एंड द डायरिया में बी ब्लडी डायरिया, ब्लड आ सकता है डायरिया में। देर विल बी वेट लॉस, देर विल बी डिहाइड्रेशन, राइट। और कुछ भी खाएगा नहीं। एक तो सबसे मेन चीज है, इट विल नॉट टेक एनी फूड और वाटर, इवन पानी भी नहीं पिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो सीन इन यंग पपीज एंड इट इज हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज। इनफैक्ट डॉग दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद फीकल मैटर ऑफ सिक डॉग, जिस डॉग को मींस पार्वो हुआ है उसके फीसिस, उसके जो स्टूल्स है उसके आसपास अगर एक हेल्दी डॉग जाएगा देन देयर इज ऑल चांसेस दैट इट मे गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम पार्वो। ओके, वेट्स ट्रीट डॉग विद पार्वो बाय प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी में काफी डिहाइड्रेशन होती है, तो इसीलिए वेट्स जो होते हैं जनरली आपको फ्लूइड देंगे, मींस द डॉग विल बी गिवन इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड and also there will be given antibiotics so as to prevent any secondary bacterial infection. Never to forget to vaccinate your puppy because this parvo is also a vaccine preventable disease. So अगर आपने पार्वो की वैक्सीनेशन करवाई है एंड रेगुलर इंटरवल में हर एनुअली आप वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, देन पार्वो के चांसेस बहुत कम है। द थर्ड डिजीज अबाउट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज ए डेडली डिजीज जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंड दैट इज rabies. So rabies is also a viral disease.
सिम्टम्स जो होते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के, देखिए जनरली ये जो है दो फॉर्म्स में देखा जाता है। एक रहता है आपका फ्यूरियस फॉर्म और एक होता है डम्ब फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले जो रहता है दैट इज़ द डम्ब फॉर्म। द एनिमल विल बिकम डिप्रेस्ड, इतना एक्टिव नहीं रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, इट विल बी चेंजिंग इनटू ए फ्यूरियस फॉर्म, वेरी एग्रेसिव, काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ इट विल नॉट बी रेडी टू कम इन एक्सपोजर टू लाइट में आने की कोशिश नहीं करेगा, डार्क में रहेगा। और अगर आप उसके साथ कुछ भी मतलब मिलने की कोशिश करें या अगर फ्रेंडली ब्रीड भी होगा तब भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, सो और एक बात जो है आपको याद रखनी है कि रेबिस जो है अगर डिटेक्ट हो गया है तो उसमें उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज़ 100% फैटल, मोर्टेलिटी 100% है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। अगर आपने अपने डॉगी को, पपी को सही टाइम पे वैक्सीन दिया है एंड एनुअली उसे रिपीट भी कर रहे हैं तो रेबिस होने का कोई चांस ही नहीं है। देयर इज़ नो चांस। इट स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ रैबिट डॉग, दैट ऑल ऑफ यू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट रेबिस. You have to take proper The fourth care. disease about which I am going to discuss is heartworm. This heartworm disease is caused by the parasite Dirophilaria immitis. Okay, so the symptoms are lethargy, coughing, respiratory distress, heart disease, weight loss, emaciation. These will be seen in dogs suffering from heartworm infection. Heartworm are parasites that live in dog's heart, weakening the heart or the circulatory system, also affecting its immune system. Heartworm is spread by mosquito. जब आप देखेंगे अगर आपका जो पेट जहाँ पे है उसके चारों तरफ काफी मॉस्किटोस हैं and it is not a properly sanitized place, then it may have chances to get the heartworm infection. Not just places but with dry climates also. Buying preventive medications is comparable to buying insurance. अगर आप vaccinations दे रहे हैं उसको टाइम पे तो it is just like buying insurance. मतलब उसको बहुत कम chances हैं it will remain fit from any kind of disease. While you may not want to spend money now, अगर आपने vaccination नहीं करवाया, अगर अभी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं तो बाद में और खर्च करना पड़ेगा. So be very sure you have vaccinated your dog against all kind of these infections. The fifth disease about which I am going to discuss is kennel cough. The symptoms of kennel cough include heavy coughing, gagging and lethargy. The dog will be depressed, won't be that much active, and you have to understand that this disease is highly contagious respiratory infection that causes inflammation and irritation of the airways. Respiratory distress होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, coughing होगा, sneezing होगा, ये कुछ common symptoms है. It is called kennel cough because it is a disease that can spread rapidly through animal in close proximity like shelter, dog parks, boarding kennels and dog daycares. By direct contact with an infected animal, coughing or sharing or contaminated bowls or blankets. While all dogs are at risk, puppies and unvaccinated and older dogs are more likely to get kennel cough due to their weak immune system. So you have to be very careful that it do not come in contact with any pet who is in the exposure risk or who is coughing, sneezing or having any respiratory distress. The sixth disease about which I am going to discuss is leptospirosis. The symptoms of leptospirosis are fever, muscle tenderness, lethargy, dehydration, vomition and jaundice. These are the symptoms which will be evident if a dog is suffering from your leptospirosis. The disease is caused by contact either directly or through a sick dog with leptospira bacteria, which can be found in soil and natural waters like stream, lakes and rivers. इन सब जगहों पे आपका leptospira bacteria काफी इनफ अमाउंट में पाया जाता है. द अमेरिकन वेटनरी मेडिकल फाउंडेशन AVMA says dogs can also come in contact with bacteria in infected urine, urine contaminated food or bedding or a bite from sick animal. So the leptospira is very contagious in nature and may come through even contaminated bedding, urine infected substances. So
you have to be sure that you vaccinate your animal, because the vaccination, the multi-disease vaccine which the vets give, contains against immunity against your leptospira infection. So if it is vaccinated, then there is minimum chance of getting the leptospira infection. So these were the diseases about which I wanted to discuss with all you smart, intelligent pet owners who are having a furry breed and you don't want to neglect its health. So be sure you vaccinate it regularly, and also be sure that if you have any kind of queries, doubt, then do visit your nearby vet and get consultation and make your dog healthy, fit and fine. Please do subscribe my channel and share with all other pet owners.